we are learning chapter 6, that is draw with TuxPaint. Right? Since in yesterday's class we have learned how to open a new file. Right? We have learned how to open a new file, and earlier we have learned parts of Tux window and started with Tux. Right? Chapter 10 is draw with TuxPaint. Draw pictures, paint colors on computer with the help of TuxPaint. Okay. Now yesterday we have learned how to open a new file, right? Before going into the next topic, we will quickly summarize what we have learned in our yesterday's class. Okay. So yesterday we have learned how to open a new file in TuxPaint, right? How to open a new file, right? First was you have to click on the new icon, right? First step was, what was your first step? Your first step was click on new icon, right? Now step 2 is, if you want to choose different background or color, then you have to scroll down, right? Number 2, scroll to change the background and the color. Okay, scroll to change picture of for your background, right? Picture for your background. Okay, so this is your second step. Only if you want to change your picture, जो भी स्क्रीन पे है, अगर वो आप वो यूज करना चाहते हो तो you don't have to scroll it. But अगर आपको और भी options देखना है, if you want to see other options, then you can just scroll. Okay, so scroll to change pictures for your background. That was your second step, right? And the third one is choose a color or picture for your background. आपने background को choose कर लिया, right? वो background के लिए आप कौन सा color choose करना चाहते हो? Step 3 में आप color choose कर सकते हो. Okay? Step 3 is choose a color for your picture, right? Step 3. Depends upon you which color you want. Okay, आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो आपके हिसाब से. Okay, या तो फिर आप if you like blue color then आप blue color चूज कर सकते हो, है ना? If you want black color आप black color का background रख सकते हो. Okay, so step 3 is choose a color for your background. Okay, now the step 4 is click on the open icon. जब आप ये सब चूज कर लोगे, लास्ट में स्टेप नंबर 4 में क्या है? Click on open icon. Click on open icon. ठीक है? लास्ट में जब आप सब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप 3 तक आप आके क्लिक करोगे, लास्ट में क्या करोगे आप? यू विल क्लिक ऑन ओपन आइकन. ठीक है, जब आप ओपन आइकन क्लिक करोगे तो आपका नया फाइल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. ठीक है? This is how you open a new file, right? आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, वहाँ पे राइट साइड में क्या है? टूल्स के वहाँ पे साइड में न्यू का आइकन दिया गया है, राइट?
Now next subtopic is using fill tool. Okay, next is using fill tool. फिल टूल को हम कैसे यूज करेंगे? To color in big areas quickly with just one click, you can use fill tool. आप अपने बुक में देख रहे हो using fill tool, पेज नंबर 42 में देखिए to color in big areas. ओके, fill tool आप कब यूज करोगे? fill tool आप कब यूज करोगे? You use fill tool color in big areas. Okay, wait. You use fill tool to color in big areas quickly with just one click. With just one click. Okay, तो फील कर आप कब यूज करोगे? जब आपने ड्राइंग फर्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने ड्राइंग किया है, ठीक है, आपने ड्राइंग किया है, यू ड्रॉ, आपने यहाँ पे किया है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ड्रॉ दिस बॉल, आपने एक बॉल ड्रॉ किया है इसे, ओके, आपने क्या किया है, मान लीजिए आपने टच पेज में ये बॉल ड्रॉ किया है, ओके, जब आप ये बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो इसके अंदर क्या करना है? नाउ यू वांट टू फिल कलर, बॉल में आपको क्या करना है? कलर करना है, ठीक है। आपको जब एक ही टाइम पे ये सब को कवर करना है, कलर करना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही टाइम में अगर कलर करना है तो यू विल यूज फिल टूल, ठीक है। इस वक्त आप क्या यूज करोगे? फिल टूल यूज करोगे, ठीक है। तो जब आप फिल टूल यूज करके कलर चूज करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा आपका एक ही टाइम में क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा, ये पूरा बॉल क्या हो जाएगा? आपका कलर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका ऐसे कलर हो जाएगा, एक ही टाइम में आपका क्या होगा? ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे मतलब पेज की तरह ऐसे इसको यूज नहीं करना है, एक बार आप क्लिक कर दोगे ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? कलर फिल हो जाएगा। वैसे ही आपको नेक्स्ट इसमें भी आपको कलर दूसरा कलर करना है इसमें, ठीक है, आपको रेड कलर करना है इसमें। तो जब आप रेड कलर चूज करके यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो ये पूरा आपका ये जो स्पेस है क्या हो जाएगा? ये एक ही टाइम पे सब में क्या हो जाएगा? कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज फिल टूल। फिल टूल इसलिए यूज करते हैं कि हम कोई सा भी अगर बिग एरियाज हो जहाँ पे आपको टाइम लगता है कलर करने के लिए, ठीक है। अगर आप मैनुअली माउस को लेकर अगर ऐसे पेंट करने जाओगे तो वहाँ क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। अगर वो बड़ा एरिया है, ठीक है, और उसमें आपको एक ही कलर करना है, तब आप क्या यूज कर सकते हो? तब आप फिल टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 पे क्या? स्टेप 1 ओपन अ ड्राइंग, ठीक है। ओपन आपने मतलब यू कैन ओपन अ ड्राइंग, आपने जो ड्राइंग किया है वो भी वहाँ पे स्क्रीन पे होगा, ठीक है। नंबर 2 सेलेक्ट द फिल टूल, इसके लिए क्या करना है? यू हैव टू सेलेक्ट फिल टूल, ठीक है। इसमें क्या करना है? सेलेक्ट फिल टूल। स्टेप 3 में देखिए चूज एनी कलर, स्टेप 3 में क्या है? यू कैन चूज एनी कलर, ओके। लेट अस सी व्हेदर इट्स अवेलेबल। You can see in your book as well. Yeah. आपके बुक में यही है, राइट?
ओके, सो ये है आपका क्या है, जब आप टक्स पेन ओपन करोगे तो आपका ये इस टाइप का दिखाई देगा, राइट, जैसे हमने पेन के क्लास में भी पढ़ा है ना। एंजल यू कैन डू रिवीजन, ये हम सब रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ड्राइंग है, राइट, यहाँ पे क्या है, एक पिक्चर दिया गया है, ड्राइंग है, ठीक है। यहाँ पे सारा क्या है, ये सब टूल से, ये साइड का सब क्या है, ये सब साइड का ब्रशेस है, राइट। एंड यहाँ पे क्या है, ये आपका नीचे का कलर्स, क्या है, कलर्स, ओके। फर्स्ट आप कौन सा टूल यूज करोगे, फिल टूल, ठीक है। कौन सा टूल, फिल टूल। फर्स्ट यू ओपन अ ड्राइंग, सेकंड क्या है, सेलेक्ट फिल टूल। जब आप फिल टूल सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, फिल टूल सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको ये सारा पार्ट में एक ही कलर लगाया हुआ है, राइट, ये सब पार्ट में क्या है, एक ही कलर लगाया हुआ है। तो ये सब में अगर एक ही बार में एक ही कलर यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, फिल टूल। पहले आप फिल टूल में जाकर सेलेक्ट करोगे फिल टूल, उसके बाद आप कलर ऑप्शंस, ये जो भी कलर दिए गए हैं यहाँ से आप कलर चूज कर लोगे, ठीक है। जैसे आप कलर यहाँ से चूज कर लोगे वैसे आप यहाँ पे जाके बस यू हैव टू क्लिक, एक बार आपको क्लिक करना है। जब आप एक बार क्लिक करोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, आपका कलर हो जाएगा एक ही साथ में, ठीक है। यू डोंट नीड मच टाइम, आपको क्या है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज फिल टूल। एक टाइम में जो बड़ा, ये क्या है, थोड़ा बड़ा स्पेस है, राइट, ये बिग एरिया से, राइट, एक टाइम में अगर बिग एरिया से आपको एक ही बार में कलर करना है तो दैट टाइम यू विल यूज फिल टूल, ओके। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। Okay, so this was about fill tool. Okay, next is how using paint tool. Next क्या है आपका, using paint tool. Okay. Next है आपका using paint tool, right? पेन टूल। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पेन टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बुक पेज नंबर 43 में देखो, टू ड्रॉ लाइंस एंड मेक शेप्स वेयरएवर यू वांट ऑन द स्क्रीन यू कैन यूज पेन टूल, ठीक है। जब भी आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करना है या फिर आपको कोई शेप बनाना है, राइट, तब आपको क्या यूज करोगे, पेन टूल यूज करोगे, ठीक है। कलर आपको, कलर यू कैन चूज एनी कलर यू वांट, कोई सा भी कलर आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको कैसे लाइन ड्रॉ करना है, आपको अगर फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेक क्लाउड्स, राइट, आपको क्या करना है, ऐसे यू विल मेक क्लाउड्स लाइक दिस, राइट। ऐसे आप जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप कौन सा टूल यूज कर सकते हो, आप पेन टूल। विद द हेल्प ऑफ पेन टूल यू कैन ड्रॉ लाइन्स, ओके, यू कैन मेक शेप्स ऑफ anything you want, ठीक है। so this is how you use pen tool, ओके। आप इसमें ड्रॉ भी कर सकते हो और आप पेन टूल की हेल्प से आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है। फिल टूल में क्या था, whenever you use fill tool it is for the big areas, right। आप एक टाइम में बिग एरिया, फॉर एग्जांपल आपने ये बड़ा सा क्लाउड बनाया है, ठीक है, आपने ये क्लाउड बनाया है, अब यू वांट टू फिल कलर इनसाइड दिस क्लाउड, राइट, आपको इसके अंदर कलर करना है। तो जब आप इसके अंदर पेन टूल, अगर आप पेन टूल यूज करोगे कलर करने के लिए तो क्या होगा,
इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, राइट। और क्या होगा, आपको मैन्युअली ऐसे करके कलर करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये बड़ा एरिया है तो आपको क्या करना है, एक ही टाइम में अगर कलर करना है वो भी एक ही कलर से, तो यू कैन यूज फिल टूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लाउड बड़ा सा का बनाया है, ओके, एंड आपका ये ओके फॉर एग्जांपल ये एप्पल, ठीक है, ये क्या है एप्पल, यहाँ पे क्या है पत्ता है, ठीक है। आपको क्या करना है, रेड कलर करना है एप्पल के अंदर, तो आप रेड कलर चूज करके एक ही बार में क्लिक कर दोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लीफ है, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे शेप का है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे शेप का है, तो आप क्या है छोटा छोटा स्पेस पे आप मैन्युअली पेंट टूल के हिसाब से पेंट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर एक टाइम में फिल करना है तो यू हैव टू यूज व्हाट, फिल टूल, ठीक है, यू हैव टू यूज फिल टूल, ओके। पेंट टूल की हेल्प से आप कोई कलर चूज करके आप कोई सा भी शेप कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। पेंट टूल क्या करेगा, आपका लाइन ड्रॉ करने में और शेप्स कोई सा भी बनाने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए आप स्टेप 1 में क्या है, सेलेक्ट द पेंट टूल। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द पेंट टूल, ओके। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट पेंट टूल। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट पेंट टूल, राइट। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है आपका चूज द कलर यू वांट। चूज द कलर यू वांट, आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो, राइट। चूज द कलर यू वांट, ओके। सेकंड स्टेप में क्या है, आपको कोई सा भी कलर, आपको कोई भी कलर अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हो, ओके। स्टेप 3 में क्या है, चेंज द साइज और थिकनेस ऑफ द ब्रश। स्टेप 3 में क्या है, चेंज द साइज और थिकनेस ऑफ द ब्रश। चेंज द साइज और थिकनेस ऑफ द ब्रश। आप जो ब्रश यूज कर रहे हो उसका साइज आप क्या कर सकते हो, उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, ठीक है। आपको कौन सा साइज का चाहिए ब्रश, अगर आपको पतला लाइन ड्रॉ करना है तो यू कैन पतले ब्रश यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लाइक आई वांट टू चेंज द शेप ऑफ माय दिस पेन, मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसका शेप बढ़ा सकती हूँ, इसका शेप घटा सकती हूँ। लाइकवाइज आप पेन ब्रश भी क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो उसका साइज, मोटा थिकनेस, एंड आप क्या कर सकते हो उसको घटा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाया, अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, इसका साइज क्या है, बड़ा हो गया, राइट। जैसे मैंने इसको यहाँ से हटाया तो इसका क्या होगा साइज, राइट, ये क्या होगा, इसका साइज घट गया, राइट। ऐसे ही आप अपने ब्रश का भी क्या कर सकते हो, थिकनेस बढ़ा सकते हो या फिर आप उसको घटा सकते हो, ठीक है। आपको कौन सा साइज का चाहिए वो साइज में आप यूज कर सकते हो, ओके। दिस वाज स्टेप 3, राइट। नाउ स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में है click and move the mouse over the area you want to fill with color by clicking on it. स्टेप 4 में क्या है, आप जब आप माउस से पॉइंटर को लेकर जाएंगे कोई सा भी स्क्रीन पे, लाइक आपने ड्राइंग किया है, वो ड्राइंग के अंदर आपको कलर फिल करना है तो क्या करेंगे आप, वो माउस की हेल्प से वो पॉइंटर को आप लेकर जाएंगे उस पे और उस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। वो कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। यू कैन ड्रॉ एंड कलर यूजिंग पेंट टूल। नंबर 5 में स्टेप 4 तक दिया गया है, बट आप पेंट टूल के हेल्प से कलर भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। वेयर एज फिल टूल यू कैन ओनली फिल कलर्स, ठीक है। फिल टूल की हेल्प से आप सिर्फ फिल, उसके अंदर कलर फिल कर सकते हो, उसके हेल्प से आप ड्रॉ नहीं कर सकते। बट पेंट टूल के हेल्प से आप उससे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो और उससे कलर भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिल टूल एंड पेंट टूल, okay. With this we have come to the end of our class for today. We will continue it tomorrow, okay. So thank you everyone. Good morning dear students. Now this is your math class, so be ready with your exercise book.
the topic for yesterday's class was multiplication, right? So let me do a quick revision of yesterday's class and we will move on to the topic for today. So for yesterday we studied multiplication, right? We studied multiplication on yesterday's class. So how did we study multiplication? We tried to study it in ones and tens ways, right? For example, how did we did the multiplication on yesterday's class? 8 twos are 16, right? But 16 together cannot be kept here because in ones place only one digit number are to be kept. So we divided the number 16 in tens and ones. So we wrote 6 over here and the 1 we carried over to tens place. Now we multiplied 8 with 3. 24 plus 1, 25. So this is how we did yesterday's class. Today for today's topic we are going to deal with certain question and answers, alright? We will deal with certain question and answer for today. On the board, if you all know the answer, you can leave it that in the comment box. Alright. So first question for today we will try to solve all the question answers together. Okay. So the first question is, what comes before 9? This is your first question. So what will be the answer? You all tell me what will be the answer. The question number 1 is, what comes before 9? Alright. Before मतलब आगे. 9 के आगे कौन सा नंबर आता है? So you all tell me what will be the answer for question number 1? What comes before 9? What is the number that comes before 9? You can tell me the answer in the comment section. What comes before 9? It is, what is the answer? You all tell me. Very good. Mention your name also so that I can know who you are. Angel, very good. And who was the next one? Mention your name as well, okay, so that I can understand. Very good, Angel. The number that comes before 9 is 8. Alright? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Alright, so what is the question asking us? It is asking that what is the number that comes before 9? So here I have written numbers serially. The question asks us what is the number that comes before 9? So the number before 9 is 8. So our answer is 8. Alright, so question number 2. Be very attentive, look at the board carefully and try to understand the question, alright, so that you can answer it along with me. Next question is, so this is our question number 2.
guess the board is visible for you all. So the second question for today is what comes after 24? So you all tell me the answer. What comes after 24? Tell me the answer in your comment box. Please mention your name and section also. Okay. Yes, you are supposed to write this in your copy. Copy this in your exercise copy. Okay. So tell me the answer for this question. What will be the answer? What comes after 24? What is the number that comes after 24? After 24? Angel, very good. And who is commenting 45? 45 is the wrong answer. It is 25. Very good. So, if I write the number serially, like 20, 21, 22, 23, 24 and 25. If I write the numbers serially, now what the question answers, it asks us the number that comes after 24. After matlab बाद में 24 के बाद में कौन सा नंबर आता है? Like you can see over here as well. After 24 the number that comes is 25. So the answer for this question is 25. Alright, so now we have solved 2 questions. Now we will move on to the third question. Question number 3. What comes between So tell me the answer for this question. Let me read the question for you all. Okay. What comes in between 64 and 66? What will be the answer over here? Tell me in the comment box. Very good. Mention your name, please. How will I know who you are? Very good. The correct answer is 65. So to give the proper answer, you all have to be very careful while reading out the questions over here. Alright, we have to read the questions very carefully and try to understand what the question is trying to ask, and you have to answer it accordingly. Alright, so let me give you another question for you. Okay. What will be the question? What will be the answer for this question? What comes in between 96 dash and 98? What will be the answer? What will be the answer over here? Very good. Please mention your name with the answer itself. It is 97. Alright, I hope you all are being clear with the thing that is being taught over here. So, our next question that we give you. What will be the answer for this question? What comes after 99? What is the number that comes after 99? Okay, very good. It is 1.
0, 0, 100. And when we write it in terms of numbers name, we write it as ONER HUNDRED. 100. You all have to know the spellings of the numbers also, okay? What comes after 99? It is 100. And when we write 100 in terms of number name, it is written as ONERHUNDRED, 100. Okay, so our next question will be which is the biggest number. So I have written 4 numbers over here and we have to write the answer we have to write is the biggest number amongst the 4. So what will be the answer for this? Look at the numbers and tell me which is the biggest number over the 4 numbers. Which one is the biggest number? Mention your name also. Comment के साथ अपना name mention कीजिए please, so that I can understand who you are. Very good. 90 over here is the biggest number, and so the answer for this question is 90. Why 90? Because as we know, 70, 60 and 40, all 3 numbers are less than 90. 90 is the biggest amongst all the numbers over here. So our answer will be 90. Alright. So likewise, so moving on to the next question we have. The smallest number. Alright. So for that the question is so you all look at the numbers carefully and tell me what is the correct answer for this question. What is the question asking? The question asks us to tell the smallest of the number amongst all the 4 numbers. So what will be the answer for this? 20, 12, 14 and 10. So tell me which is the smallest number. Tell me the smallest number. Angel, very good. Anyone? Srishti, very good. Tell me the answers. What is the answer for this question? It is 10. Alright? Why 10? Because as we know, 10 over here is the smallest number. Why? Because 14, it is bigger than 10. 12, it is bigger than 10 as well. And 24, it is also bigger than 10. So the correct answer for this question is 10. Because 10 is the smallest number amongst all the 4 numbers over here. Alright? So moving on to the next question.
question over here is write the number name of 24. So how is 24 written in forms of words or in forms of number name? 2, 4, 24. It is written in digits, right? This 24 is written in digits. So how do we write this 24 in forms of number name? You all tell me the answer. How is this written? Tell me the answer, please. Very good, Shrishti. It is written as TWENTY-FOUR, 24. In terms of digit, we write 24 like this. But in terms of words, we write 24 like this. Alright? So this is the proper answer how we write the number name of certain numbers given. Likewise, if I give you another question. So, write the number name of 100. How do we write this? How do we write this? Tell me. How is 100 written in forms of number name? So tell me. How is 100? 100 written in forms of number name? Not only 100, we write it as ONE 1. HUNDRED 100 because this is 100. So we have to write 1. If it was 200, we had to write it as 2 and 100. Okay, so we have to mention the 1 in front of 100 as well. Alright? Because it is 100, so we have to write it as ONE 1 and HUNDRED 100. Alright? So, what we did for today's class, we did some questions and answers related to math. We did what comes before, what comes after, what comes in between. We tried to solve certain numbers name also. So this is how we are going to conduct our classes further also. So this is the end of your math class. This is all for today. I hope you all will do the revision of the topics that are being taught in your classes. Thank you. Now get ready for your SST class. Good afternoon, students. Now everyone take out your SST book. EVS copy. A very good afternoon everyone. Welcome to online classes. Online classes में आप लोगों का स्वागत है. So students, today we are going to discuss about, आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? People who help us. People who help us means our helpers name. क्या सीखेंगे? Our helpers name. So today our topic is, हम लोग का आज का टॉपिक क्या है बच्चों? Our helpers name. Okay students. Okay, good afternoon, Pratik, Aradhya. Okay, students, today we are going to learn about our helpers name. कल हम लोग डिस्कस किए थे एनिमल्स ओन्स नेम एंड आज का टॉपिक है हम लोग का टुडे आवर टॉपिक इज
is our helper's name. Okay. Wait, students. Sorry students, I am confused. Everyone take out your SST book. आप लोग SST book निकालिए. And open the page number. And open the page number 115. Page number 115. Sorry students, I am confused. मैं confused हो गई थी. मुझे लगा कि यूकेजी का क्लास है. ओके, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. ओके, सो स्टूडेंट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, कल हम लोग क्या चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे? कल हम लोग डिस्कस किए थे आवर लैंड्स फॉर्म. क्या चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे? आवर लैंड्स फॉर्म. ओके, so yesterday we already learned the definition of what is our land form, and today we are going to discuss about one by one. कल हमने आप लोगों को सिखाई थी कि अर्थ क्या है, अर्थ क्या चीज़ से बना है. So in this way everyone open the chapter 14. आप लोग chapter 14 को open कीजिए. Chapter chapter name is the earth and the sky. Earth and okay, so this is our main topic. Okay students, so the earth and the sky is our main topic. Okay, and yesterday we discussed about landform. कल हम लोग क्या चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे? What is landform? Okay, so what is landform? The types of natural, sorry. The types of different land where we can live are all landforms. As we know that our earth is made of sand and our earth is made of land and water. पहले हम लोग को इसमें आप लोग रिवाइज कर रहे हो कल का चीज. हमारा अर्थ क्या चीज से बना हुआ है? हमारा अर्थ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. हमारा अर्थ क्या चीज से बना हुआ है? लैंड और वाटर से. सो यही लैंड में we will find different types of land. इसी में हम लोग को क्या मिलेगा? different types of land. Some land is look like that, some land is flatted, some land is plain, some land is hill. उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये लैंड हमारे अर्थ में कैसा कैसा तरीका का लैंड हम लोग को मिलेगा, जो लैंड में हम लोग अभी सर्वाइव करते हैं. ओके, एंड अर्थ क्या चीज से बना है? मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. हमारा पृथ्वी क्या चीज से बना है? लैंड और वाटर से बना हुआ. ओके, सो ये हम लोग ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके थे
नंबर 2 में आएगा आपका hills, ओके, एंड नंबर 3 में आएगा ये आपका mountains, MUNTAINS। सो पहले हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी व्हाट इज प्लेन। प्लेन किसको बोलते हैं पहले तो आप लोग को समझना है। प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स। नेक्स्ट वन इज वैली, VALL। Valleys. Fifth one is okay. See, 4. Fifth one is plateau. Okay, and sixth one is desert. See, so look at here. These all are our landform. इसको क्या बोलते हैं? Landform बोलते हैं. Okay. So first one is plain, PLAINS plains. Second one is hill, HILLS hills. Third one is mountain, MOUNTAINS mountains. And fourth one is valley. Okay. Same like that. Fifth one is plateau, PLATEAUS plateaus. Sixth one is desert. So students, look at this word. So these all are our landform. ये सारा क्या चीज़ है? हमारा landform है। जैसे कि just before थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बोला our earth is made of land and water। हमारे अर्थ जो पृथ्वी हम लोग जहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं वो क्या चीज़ से बना हुआ है? लैंड और वाटर। सो आप लोग देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ। आउट ऑफ 3 4 आप देखिए so if we will divide this all into 4 equal halves, आप इसको डिवाइड कीजिएगा 1 2 3 4। so out of this 3 ये 3 में आप लोग को 3 पार्ट्स में क्या मिलेगा? वाटर। क्या मिलेगा बच्चों? वाटर। ओके, ओनली इन 1 पार्ट्स, एक पार्ट्स में आप लोग को मिलेगा लैंड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस 3 पार्ट्स इज कवर्ड विद वाटर। ये तीनों पार्ट्स क्या चीज से कवर्ड हुआ है? वाटर से कवर्ड हुआ है। ओनली 1 पार्ट्स आप लोग को क्या मिलेगा? लैंड। यही लैंड्स में हम लोग लैंड्स का बहुत फीचर्स देखेंगे, बहुत उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये लैंड में कौन सा टाइप का लैंड आता है। तो उसी को फर्स्ट में बोलेंगे प्लेन। अब देखेंगे कि प्लेन किसको बोलते हैं? व्हाट टाइप ऑफ लैंड वी कॉल एज अ प्लेन, व्हाट टाइप ऑफ लैंड वी कॉल एज अ हिल, what type of land we call as a mountains, and what type of place we call as a valley. Okay, so first we can focus on number 1. Okay, so now look at first we can focus on number 1. Okay students, हम लोग फोकस करते हैं नंबर 1 में। So plains is a, आप लोग बुक में देख सकते हैं, फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स। जो फ्लैट लैंड है, मान के चलिए एक फ्लैट लैंड है, ये जो फ्लैट लैंड है ये लैंड को क्या बोलते हैं? फ्लैट लैंड इज कॉल्ड द प्लेन। जो जमीन एक साइज का पूरा प्लेन है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द बिहार। बिहार क्या है? एक प्लेन्स में काउंट आता है बिकॉज इन बिहार स्टेट वी विल नॉट गेट बिग माउंटेन्स। हम लोग बड़ा बड़ा माउंटेन्स फाइंड नहीं कर पाते हैं। ओके, इट स्प्रेड्स ऑफ लो फ्लैट एट द प्लेन्स अलोंग द कोस्ट आर। ओके, सी आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज प्लेन? अ लैंड व्हिच इज सम फ्लैटेड। वो जमीन जो फ्लैट है उसके पास ऐसे ऊबड़ खाबड़ माउंटेन्स जैसा प्लेस नहीं है, उसको बोलते हैं प्लेन्स। द लैंड which have a flatted place are called plains. ओके, वो लैंड जो ऐसे एकदम
जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं प्लेन्स. इन दी प्लेन्स वी विल नॉट फाइंड द माउंटेन्स, हिल्स, वैली, ये सब चीज हम लोग को फाइंड नहीं होता है. ओके. सेकंड वन इज हिल. हिल्स मीन्स व्हाट? आप लोग बुक में देखिए, एरिया हायर देन द प्लेन्स आर कॉल्ड द हिल्स. एरिया हायर देन द प्लेन्स. सी, एरिया higher, H-I-G, higher than the plains are called hills. It means what students? प्लेन से थोड़ा ऊंचा, ये तो प्लेन हो गया. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ हियर ऑल्सो. एरिया हायर देन प्लेन्स, प्लेन से थोड़ा ऊंचा, वो लैंड को बोलते हैं हिल. वो लैंड को क्या बोलते हैं? हिल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका प्लेन्स. ओके. व्हाट इज दिस प्लेन? इससे थोड़ा सा ऊंचा, इससे थोड़ा सा ऊंचा. एक मिनट रुक जाइए. वेट. ओके स्टूडेंट्स, सी फॉर एग्जाम्पल look at here, this is plane. What is this? ये एक plane है. अच्छा यहाँ पर भी एग्जाम्पल, this is plane. इससे हल्का आपको ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा मिलेगा. इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं? हिल्स. स्मॉल स्मॉल माउंटेन्स टाइप का भी दिखेगा, छोटा छोटा पहाड़ भी इसमें आप लोग को दिखेगा. एंड व्हाट इज माउंटेन्स? माउंटेन्स बोलने से ही हम लोग का माइंड में आता है, यस माउंटेन्स इज अ बिग बिग पहाड़. बड़ा बड़ा पहाड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन्स बोलते हैं. ओके. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जो हिल्स है ऑलवेज लोअर देन द माउंटेन्स. हिल्स भी एक पहाड़ में ही आता है जहाँ पर छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल होता है, स्मॉल स्मॉल होता है, लाइक दैट दिस. ओके. बट ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग को एक चीज माइंड में रखना है, दिस माउंटेन इज बिगर देन द हिल्स. माउंटेन्स जो होता है ना, इस हिल्स से बड़ा होता है, एंड दिस हिल्स इज लोअर देन द माउंटेन्स. जो ये हिल्स है माउंटेन्स से छोटा है. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माउंटेन्स. माउंटेन्स आर द हायर देन द हिल्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, माउंटेन्स आर द हायर देन हिल्स. ये क्या है? हिल्स से बड़ा होता है. ये क्या है? हिल्स से बड़ा होता है. Mountains is that higher than hills. See, mountains are the higher than hills. मान के चलिए mountains से, for example, this is, what is this? This is प्लेन. ये क्या है? प्लेन. ओके. वेट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लेन्स. ये क्या है? प्लेन्स. ये क्या है? आपका हिल्स. सो इससे जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं माउंटेन्स. इसको क्या बोलते हैं? माउंटेन्स. एंड माउंटेन्स इज हायर देन द हिल्स. माउंटेन्स क्या होता है? हिल्स से बड़ा होता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड सम ऑफ देम कवर विथ स्नो आल्सो. सो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, नाउ विंटर सीजन इज गोइंग ऑन. सो इन द हिली एरिया में हम लोग देखेंगे, देयर वी विल फाइंड द स्मॉल स्मॉल माउंटेन्स, स्मॉल स्मॉल हिल्स आल्सो. एंड इफ देयर वी विल फाइंड द बिग बिग माउंटेन्स, अगर हम बड़ा बड़ा पहाड़ हम लोग को फाइंड वहाँ पर मिलता है, जैसे कि ये दिस इज माउंटेन्स. व्हाट इज दिस? दिस इज माउंटेन्स. दैट माउंटेन्स इज कवर्ड विद द स्नो. ये जो है स्नो से कवर हुआ रहता है, स्नोफॉल से इसको ढका हुआ रहता है. एंड इट इज लुक वेरी ब्यूटीफुल आल्सो. ओके. नेक्स्ट वन इज वैली. सो लेट्स सी व्हाट इज वैली. लो लैंड बिटवीन द हिल्स एंड माउंटेन्स आर वैली. लो लैंड बिटवीन द हिल्स एंड माउंटेन्स, एक हिल्स और माउंटेन्स के बीच में. सो लुक एट इट, हिल्स और माउंटेन्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल
For example, this is the little students. For example, this is the mountains. Okay. What is this? This is the mountains, and this mountains is covered with the snowfall. ये क्या चीज से कवर्ड हुआ है? स्नोफॉल से कवर्ड हुआ है. ओके, स्नोफॉल से कवर्ड हुआ है. ओके, एंड इसके नीचे नीचे आप छोटा छोटा आप लोग को क्या भी मिलेगा? वेट, इसमें आपको ये बीच से जो प्लेस निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग वैली. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैली. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली. इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं. सी, लो लैंड बिटवीन द हिल्स एंड माउंटेन्स आर कॉल्ड वैली. हियर ट्री एंड फ्लावर्स ग्रो. जो ये सब पार्ट्स होता है, ये सब जगह में, यहाँ पर आप लोगों को वेट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन. इलेक्ट्रिसिटी चला गया है. मैं आप लोग को पढ़कर ही समझा दे रही हूँ. जो वैली है, जो माउंटेन्स और हिल के बीच में जो अलग अलग पार्ट्स में जो लो लैंड है, वहाँ पर आप लोग को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री वी कैन फाइंड ओवर देयर. ओके, रिवर फ्लो थ्रू देम. सो विद द हेल्प ऑफ वैली के हेल्प से, जो जगह है उसके हेल्प से जो वाटर होता है बीच में से अपना जगह बना के फ्लो होता है. ओके, द लो लाइन एंड द बिटवीन द माउंटेन्स और हिल. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज वैली. वैली क्या है? लो लैंड बिटवीन द हिल्स एंड माउंटेन्स और हिल्स के बीच में जो भी लो लैंड है उसको बोलते हैं वैली. ओके, एंड वैली क्या आता है? द प्लेस वेयर वाटर दे कैन फ्लो, द प्लेस वेयर वी कैन फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, the place where we can find the different types of flower also. I hope you all are understand. Okay, आप लोग को समझ में आया भी होगा. So next one is plateau lakes. Waits for 1 minute. 1 मिनट के लिए हम लोग रुकते हैं स्टूडेंट्स. Next our सब topic is plateau. Now we focus on plateau. Plateau क्या चीज को बोलते हैं? So see, plateaus are the slightly higher than the surrounding land. They are also called the tableland. Plateau क्या है? Plateau एक क्या है? Normal land से ऊपर वाला parts. Plateau क्या है? Look at here students. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. So see, this one. For example, this is land. Okay, ये land जो है, land से थोड़ा सा वो नेक्स्ट लैंड ऊपर होके जाता है, उसको बोलते हैं प्लेटू. अदरवाइज आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट द नॉर्मल लैंड, जो नॉर्मल लैंड है वो लैंड से थोड़ा सा ऊंचा वाला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं. प्लेट्यू आर द स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग लैंड. जो फॉर एग्जांपल ये लैंड है, वो लैंड से कोई भी पार्ट्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ में जाए उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड. उसको क्या बोलते हैं? टेबल लैंड बोलकर भी जाना जाता है. सी, जो हाईलैंड होता है ना प्लेटू का, डेट वन इज नॉट अ माउंटेन शेप्स. जो हाईलैंड होता है उसका माउंटेन शेप्स नहीं होता है. उसका जो टॉप्स होता है वो क्या होता है? फ्लैटेड होता है. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग रिप्लाई दीजिए. इफ एनीवन हैव एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए. Should I continue? Their class over. Okay students, now I repeat once again. Plateaus are the okay. One topic only.
सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लेटू के बारे में। सॉरी, प्लेटू के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज प्लेटू? Plateau are the slightly higher than the surrounding lands. For example, this is our normal land. हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, अगर ये हम लोग का नॉर्मल लैंड है, ये लैंड से थोड़ा सा ये क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है? हाई। और इसको आप लोग को एक बात आप लोग को याद रखना है कि जो इसका ये स्लोप्स होता है, टॉप होता है, रूफ होता है, that one is not a mountain shape. वो माउंटेन शेप का नहीं होता है, वो फ्लैटेड होता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज और desert. So see what is desert. So desert is the place, it is very dry land which receive low rainfall. So desert is a place, is a place, ये एक ऐसा जगह है with very dry land, ये बहुत ड्राई लैंड है, एंड रिसीव लिटिल रेनफॉल एंड इट्स, ये क्या होता है, इट्स कवर्ड विथ सैंड। यहाँ पर आप लोग को क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा सैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? सैंड। सैंड का मतलब क्या होता है? बालू। सैंड का मतलब क्या होता है? बालू। सैंडी एंड ड्राई रीजन, आप लोग को बुक में दिया है, सैंडी एंड ड्राई रीजन आर कॉल्ड द डेजर्ट। देखिए, डेजर्ट आर द दैट टाइप्स ऑफ प्लेस, दैट टाइप ऑफ लैंड, वो जमीन is a place with very dry land and the receive little rainfall। इनमें से बहुत ड्राई लैंड है, सूखा लैंड है, जहाँ पर बहुत कम मात्रा में हम लोग को रेनफॉल रिसीव होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे आज हम लोग लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू बाय पूजा मिस, है ना। फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन योर होमवर्क। आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आप लोग का होमवर्क है योर HW is write your HW is right. I hope you all are understand students। आशा करती हूँ कि आप लोग सबको समझ में आया होगा। Write difference land forms with students। ओके, आप लोग का यही क्वेश्चन है, ठीक है। राइट डिफरेंट लैंड्स फॉर्म ऑफ आवर अर्थ, अपना अर्थ का डिफरेंट लैंड्स फॉर्म के नाम आप लोग को लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इफ एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन, आप लोग क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, मैं आप लोग को क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू क्लास। नाउ योर क्लासेस विल बी कंटिन्यू बाय पूजा मैम, हिंदी टीचर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे सप्ताह के दिन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वीक ऑफ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेज ऑफ वीक, ठीक है। ओके, तो आज हम चलिए उससे हम क्या करेंगे, सप्ताह के दिन के नाम भी लिखना सीखेंगे और उससे हम क्वेश्चन आंसर का जवाब भी देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, अपना अपना कॉपी और पेंसिल
नीला कॉपी ले लीजिए और पेंसिल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सब पैक कर दिए, ठीक है। चलिए जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेज ऑफ और वीक। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक चक्र बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दिन लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन लिखना होना चाहिए। हम यहाँ पे पहले रविवार से स्टार्ट करते हैं। गुरुवार, उसके बाद होगा शनिवार। देखिए क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या है शुक्रवार और शनिवार। देखिए यहाँ पे शनिवार लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर सप्ताह में डैश दिन होते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा। होते हैं, क्या होते हैं, सप्ताह में 10 दिन होते हैं, ठीक है। होते हैं, तो अब यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है।
डैश से होती है। पहले चलिए हम पहले इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। सप्ताह में डैश होते हैं, सप्ताह में डैश दिन होते हैं, ठीक है। सप्ताह में डैश दिन होते हैं, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। सप्ताह के दिन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए हमने सप्ताह के क्या किए हैं, नाम लिखे हैं, जो कि पहले क्या है रविवार, उसके बाद सोमवार, उसके बाद क्या है मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार और शनिवार। इसमें क्या होगा, आप अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करना है। सप्ताह में डैश दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, इसका हम उत्तर क्या देंगे। यहाँ पे खाली जगह है, उसमें हमें भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्ताह में डैश दिन होते हैं, तो यहाँ से आप काउंट कीजिए कितने दिन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो सप्ताह में कितने दिन हुए, 7 दिन हुए। कितने दिन हुए, 7 दिन, ठीक है। कितने दिन हुए, 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सप्ताह में 7 दिन हुए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सप्ताह की शुरुआत डैश से होती है, मतलब सप्ताह की शुरुआत डैश से होती है। देखिए सप्ताह की शुरुआत दो ही मतलब जो दिन है जिसे हम कर सकते हैं, या तो हम रविवार से शुरू कर सकते हैं या नहीं तो हम सोमवार से कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे रविवार से शुरू किया है, तो हम क्या लिखेंगे, सप्ताह की शुरुआत रविवार से होती है। क्या होती है, रविवार से होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने फर्स्ट में क्या लिखा है, रविवार, रविवार से होगा तो सोमवार, और अगर सोमवार से होगा तो मंगलवार उसका दूसरा दिन आएगा, क्योंकि हम मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार से दिन क्या सप्ताह के शुरुआत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सप्ताह की शुरुआत डैश से होती है, सप्ताह की शुरुआत किससे होती है, रविवार से होती है, ठीक है। क्योंकि रविवार होता है, उसके बाद हमने सोमवार लिखा है। अब चलिए हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। बुधवार के बाद डैश आता है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बुधवार के बाद डैश आता है, मतलब आफ्टर बिफोर आपने तो मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम हिंदी में भी लिखते हैं बाद में और पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा क्वेश्चन में, देखिए बुधवार के बाद डैश आता है। कमेंट बॉक्स में बताइए बुधवार के बाद क्या आता है, बुधवार के बाद क्या आएगा, कौन सा दिन आएगा बुधवार के बाद। कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताइए।
कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताइए क्या आएगा बुधवार के बाद। देखिए बुधवार है, बुधवार के बाद पहले कुछ था तो हम पहले जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है बाद, तो बाद में क्या है हमारा बुधवार के बाद गुरुवार। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो गुरुवार को देखिए बृहस्पतिवार भी बोला जाता है, तो हमने यहाँ पे गुरुवार को यहाँ पे हम गुरुवार लिख देंगे, क्योंकि बुधवार के बाद क्या आता है गुरुवार। गुरुवार, अब देखिए यहाँ पे सप्ताह के दिन, तो यहाँ पे देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये हमारा शनिवार। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है शनिवार है, शनिवार। तो अब हमको यहाँ से इसी सप्ताह के दिन से हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिसमें हमको खाली जगह भरना है। तो यहाँ पे देखिए सप्ताह में 10 दिन होते हैं, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। सप्ताह की शुरुआत डैश से होती है, सप्ताह की शुरुआत डैश से होती है, रविवार, रविवार। अब यहाँ पे देखिए बुधवार के बाद डैश आता है, बुधवार के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखेंगे बुधवार के बाद क्या है गुरुवार है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे गुरुवार। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है जगह नहीं है तो हम चेंज करेंगे, स्पेस लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है घ नंबर 4 नंबर प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सोमवार के बाद डैश आता है, तो पहले हम यहाँ पे जो हम सोमवार के बाद डैश आता है, तो यहाँ पे देखिए सोमवार के बाद क्या आएगा मंगलवार। यहाँ पे सोमवार है, अब यहाँ पे हम देखिए यहाँ सोमवार के बाद क्या आएगा मंगलवार, क्या आएगा मंगलवार। तो सोमवार के बाद क्या आएगा मंगलवार, तो सोमवार के बाद हम क्या लिखेंगे मंगलवार। रविवार से पहले डैश आता है, रविवार से पहले डैश आता है। ठीक है, रविवार से पहले डैश आता है, तो फिर हम चलेंगे अपने हमने जहाँ दिनों के नाम लिखा है, तो रविवार से पहले डैश, तो रविवार से पहले, तो रविवार तो यहाँ पे है, और इसके पहले क्या आएगा तो शनिवार, शनिवार आएगा तब ना रविवार आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए पहले पूछा है तो रविवार से पहले, तो रविवार से पहले क्या आएगा शनिवार। ठीक है, रविवार से पहले शनिवार, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे शनिवार। शनिवार क्या आएगा रविवार से पहले शनिवार आता है। ठीक है, क्योंकि शनिवार आएगा उसके बाद रवि
शनिवार आएगा। तो रविवार के पहले शनिवार, रविवार से पहले क्या आएगा? शनिवार। और देखिए अब है छुट्टी वाले दिन, डैश आता है। स्कूल में जो हम लोग बच्चे कितने दिन पढ़ते हैं? 6 दिन पढ़ते हैं। और जब 7वां दिन आता है तो क्या होता है? 7वां दिन हम लोग का क्या रहता है? अब सोमवार से जब हम काउंट करेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद क्या आएगा? बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 7वां दिन हमारा क्या हो जाएगा? रविवार। तो रविवार के दिन हमारा क्या होता है? स्कूल की छुट्टी। सोमवार से पहले डैश आता है। अब फिर हम चलेंगे अपने जहाँ हमने दिनों के नाम लिखा है। सोमवार से पहले क्या आएगा? तो सोमवार से पहले क्या आएगा? रविवार, हमारा छुट्टी का दिन। क्योंकि जब शनिवार आता है तो शनिवार के बाद क्या होता है? बच्चा बहुत खुश होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग क्या होगा? अगले दिन हम लोग को स्कूल नहीं आना होता है, तो बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो उस रविवार के दिन को हम क्या कहते हैं? तो रविवार के दिन को हम लोग देखिए रविवार बोलते हैं। और हमारे घर में जो दादी और दादाजी लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं? इतवार बोलता है। क्या बोलता है? इतवार बोलता है। ठीक है, तो रविवार को भी हम 2 नाम से जानते हैं, रविवार और इतवार। और गुरुवार को भी हम 3 तरह के नाम से जानते हैं, गुरुवार, बृहस्पतिवार और कोई उसको पीरवार या कुछ ऐसे भी है नाम जो उसको लोग बोलते हैं। ठीक है, बाकी सबका एक ही नाम है, बाकी किसी का डबल नाम नहीं है। तो क्या होगा? तो बुधवार के बाद क्या आएगा? गुरुवार। और देखिए यहाँ पे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो सप्ताह के दिन के नाम हमने यहाँ पे लिख रखा पहले से ही, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ताकि हम आपको दिन से ही बता सके। यहाँ पे हम ये दिन इसलिए हमने लिख रखा है ताकि हम यहाँ पे आपको स्क्रीन के जरिए हम यहाँ से ही आपको बता सके कि देखिए यहाँ मंगल के बाद बुधवार आता है और मंगलवार के पहले सोमवार आता है, गुरुवार के पहले बाद में शुक्रवार आएगा और गुरुवार के पहले बुधवार आएगा। इसीलिए हमने ये दिन के नाम यहाँ पे क्या लिख रखा है। ठीक है, अब चलिए हम इसको क्या करेंगे? अब इसको हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमने देखा ना कि शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार के पहले शनिवार, शनिवार के बाद में क्या आएगा? रविवार। जाहिर बात है कि अगर हम सोमवार लिखते हैं तो क्या आएगा? शनिवार के बाद रविवार, शनिवार के बाद रविवार आता है। क्योंकि सैटरडे तक हमारा, मंडे से सैटरडे तक हमारा स्कूल, सोमवार से शनिवार तक हमारा क्या होता है? स्कूल चलता है। और रविवार को क्या होता है? हमारा स्कूल, हमारा ही नहीं सभी स्कूल क्या होते हैं? बंद रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है? सोमवार के बाद मंगलवार आता है। ठीक है, सोमवार के बाद डैश आता है। ये आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे रविवार से पहले डैश आता है। रविवार से पहले क्या आता है? डैश आता है। रविवार से पहले क्या आएगा? शनिवार। सोमवार से पहले क्या आएगा? तो हमने आपको दिखाया कि सोमवार से पहले क्या आएगा? तो सोमवार से पहले हमारा रविवार आएगा। क्या आएगा? रविवार आएगा। रविवार के बाद सोमवार। लेकिन जब पहले पूछा जा रहा है तो क्या आएगा? पहले रविवार आएगा, क्योंकि रविवार आता है उसके बाद में सोमवार। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है सोमवार से पहले क्या आता है? तो सोमवार से पहले रविवार। ठीक है, अब देखिए
शनिवार से पहले डैश आता है, ठीक है। शनिवार से पहले डैश आता है, तो देखिए शनिवार से पहले डैश आता है। शनिवार से पहले क्या आएगा? शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार आएगा उसके बाद शनिवार आएगा, ठीक है। तो शनिवार से यहाँ पे देखिए हम इसीलिए यहाँ पे दिन के नाम लिखे हैं ताकि हम आपको यहाँ पे दिखा के बता सके कि यहाँ पे बाद में क्या आएगा और पहले क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं शनिवार से पहले शुक्रवार आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक है। शनिवार से पहले क्या आएगा? शुक्रवार आता है। तो हमने यहाँ पे जो भी खाली जगह था हमने भर दिया है। अब चलिए एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं हम लोग को, ताकि फिर आप लोग इसको क्या करेंगे? समझ लेंगे। देखिए सप्ताह के दिन हमने यहाँ पे सीरियल नंबर से मतलब क्या सीधा सीधा लिख रखा है कि रविवार के बाद सोमवार आएगा। ऐसा तो नहीं होता कि रविवार आ गया और फिर अगले दिन हम लोग मंगलवार, ऐसा होता है? नहीं होगा, क्योंकि रविवार आएगा तो रविवार के बाद सोमवार ही आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार और गुरुवार के बाद अब ये देखिए ये जो इसमें मात्रा लगा हुआ है इस पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो रू है ये रू हम लोग बड़ी की मात्रा में लिखेंगे। यहाँ पे जो र है ये रेप जो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, उसमें ये र लगा हुआ है, क्योंकि अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कितने आदमी को हम देखते हैं, जैसे कि मेरे ही बच्चे लोग क्या करते हैं? शुक्रवार को यहाँ पे र लिख उसके बाद बार लिखते हैं, जो कि गलत है। क में र की मात्रा लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे शनिवार, अब देखिए यहाँ पे सप्ताह में 10 दिन होते हैं, तो यहाँ पे कितने दिन है? 7 दिन। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हमने क्या लिखा? 7। सप्ताह की शुरुआत डैश से होती है, तो क्या होगा? रविवार से, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, बुधवार के बाद डैश आता है, गुरुवार आता है। सोमवार के बाद डैश आता है, सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार, क्योंकि सोमवार तो मंगलवार। रविवार से पहले डैश आता है, रविवार से पहले शनिवार आता है, सोमवार से पहले रविवार आता है, ठीक है। शनिवार से पहले डैश आता है, शुक्रवार आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए साइंस क्लास के लिए। फिर कल तो संडे है, कल तो नहीं मिलेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं फिर से आई हूँ आपका क्लास में। सो टुडे आई विल टेक द साइंस सब्जेक्ट ऑल्सो, बिकॉज टुडे कर्मा मैम विल बी एंड कर्मा मैम इज एब्सेंट। कर्मा मैम एज एब्सेंट है एंड फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए आई विल टेक योर साइंस एज वेल एज एसएसटी क्लास। साइंस क्लास भी मैं ही लूँगी और एसएसटी क्लास भी मैं ही लूँगी। ओके स्टूडेंट, सो सी आज हम लोग क्या चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? पहले तो आज, अभी आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, अभी हम लोग सब्जेक्ट साइंस, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस, ओके। एंड सी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आज हम लोग क्या चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस। आज हम लोग
आप लोग को बुक नहीं निकलना है, यू जस्ट फोकस ऑन दी ऑनलाइन क्लासेस। आप लाइव जा रहे हैं, लाइव में आप लोग फोकस कर पाएंगे। ओके, आप लोग को बुक आज नहीं निकलना है, लोग जस्ट आज डायरेक्टली एक टॉपिक को ही लेके पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्ड करो बच्चे। Okay, students, as I repeat one more time, so today I will take the science class also. Okay, and from Monday, if classes will be go online, otherwise offline, I will take SST as well as science also. Okay, Monday से देखते हैं कि क्लास लाइव जा रहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन जा रहा है। अगर ऑनलाइन जाएगा तो आई विल टेक साइंस एज वेल एज SST also, because our Karma ma'am साइंस टीचर विल बी एब्सेंट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए वो एब्सेंट रहेंगी। सो आप लोगों को बुक नहीं निकलना है, सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक वाटर। आज हम लोग वाटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फिर फर्स्ट आप लोग मुझे ये बताएंगे, एज वी नो डैट व्हाट इज द यूजेस ऑफ वाटर। आप लोग चेक कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट इज द यूजेस ऑफ वाटर। पहले वाटर का यूजेस करते हैं। Anyone tell me what is the uses of water? Can anyone tell me what is the uses of water? What is the uses of water? Water का uses क्या क्या है बच्चे? पहले ये बोलिए। What is the uses of water, students? Okay students, the uses of water, as we know that when we all are woke up at early in the morning, रोज हम लोग जब उठते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो our day will be started from the water। हम लोग का डे क्या चीज से स्टार्ट होता है? वाटर से। Okay, so uses of water are, I will write only 2 or 3। Okay, so first one is brushing, second one is washing, third one is drinking, fourth one is cooking. See, so many uses of water are there। Okay, water का uses बहुत होता है, but मैंने I will give only few examples here। Only few examples here। First one is brushing, second one is washing, third one is drinking, and fourth one is cooking। See, जैसे कि मैंने बोला कि वाटर का यूजेस हमारे डे बाई डे लाइफ में बहुत है, एंड विदाउट वाटर आवर डे विल बी नॉट स्टार्टेड ऑल्सो। ठीक है, ओके। सो इससे समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट व्हाट इज वाटर। वाटर क्या है? एक लिक्विड है विच वाटर दे डिड नॉट हैव कलर। वाटर एक क्या है? लिक्विड विच डोंट हैव एनी कलर। वाटर के पास कोई कलर नहीं होता है, एंड वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। वाटर हमारे लाइफ में वाटर
our survival. Wait, students. See, look at here. This is very important points. पहले हम लोग को समझना है वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म. वाटर एक लिक्विड है विच डिड नॉट हैव एनी कलर, जिसके पास कोई कलर नहीं है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, सर्वाइवल आवर लाइफ. लुक एट हियर, वाटर बहुत इम्पोर्टेंट से हमारे लाइफ में हम लोग को बचाए रखने में, जिंदा रखने में, अदरवाइज हमारे लाइफ में, बिकॉज our day will be started from water and without water we cannot survive. पानी के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में. ओके, सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया. when you all are coming the school, either when you all are in the home, at the home, अभी भी आप लोग घर पे हैं, जो मॉर्निंग में जो आप लोग सवेर में उठ रहे हैं, पहले आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग फ्रेश होने जाओगे. तो देयर व्हाट डू यू नीड, यू नीड अ वाटर. आप लोग को क्या चाहिए, वाटर चाहिए. ओके, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते. वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर. सी स्टूडेंट्स, हम लोग पानी के बिना कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. ओके, सी, सो यू जस्ट थिंक व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर का सोर्स क्या है बच्चों? व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वाटर? व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वाटर? वाटर हम लोग को कहाँ से मिलता है? Can anyone tell me? What is the sources of water? Now we can discuss about what is the sources of water. अब हम लोग क्या करेंगे, sources of water. वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि from where did you get the water. हम लोग को वाटर कहाँ से मिलेगा. Now we are going to discuss about sources of water. There are so many sources of water. बहुत सारे sources of water होता है. क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है what is the sources of water. It means that from where did you get the water. हम लोग को पानी कहाँ से मिलता है. तो आप लोग सिंपली बोलोगे मैम we will get the water from tap. नल से मिलेगा, राइट. आप लोग बोलोगे बट जो जस्ट यू थिंक कि टैप को वाटर कहाँ से मिलता है. Yes or no? See. So the sources of water is, first one is river. First one is river. Okay, first one is river. Second one is
Third one is distance. First one is C. Okay. Second one is river. Third one okay. Third one is pond. Fourth one is groundwater also. Fifth one is lake. So students, these all are the sources. Even ocean also. आप लोग ocean लिखेंगे. Example of ocean also. आप लोग example ocean का भी लिख सकते हैं. OCEAN ocean. Okay. Okay. So these all are the sources of water from where we will get the water. ये सारा sources है जहाँ से हम लोग को पानी मिलता है. So first one is C. First one is C. First का क्या है? C. Second one is river or a river. Third one is ponds and fourth one is groundwater and fifth one is lake. So these all are the sources of water from where we get the water. जहाँ से हम लोग को पानी मिलता है. So with the help of this all the things, our tanking, our big tank, they can fill the water and with the help of tap we get the water. और हम लोग एक नल के थ्रू big pipes के थ्रू के बड़े ये पानी वहाँ से वहाँ सप्लाई किया जाता है और वो पानी एक टैंकी में स्टोर किया जाता है और वही पानी जो वाटर है नल के थ्रू से हम लोग को मिलता है. ओके. सो वन मोर थिंग्स आर देयर. रेनफॉल इज जो रेनफॉल है, रेनफॉल इज मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेनफॉल इज मेन सोर्स ऑफ वाटर. जो रेनफॉल है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है. अब क्यों इसको मेन सोर्स ऑफ वाटर बोला गया है? लेट मी टेल यू दैट. देखिए, इफ रेन इज नॉट फॉलिंग, अगर बारिश नहीं होगा, हाउ दिस ऑल द वाटर बॉडीज दे कैन फेच, कैसे ये सब चीज भरेगा? सो मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. सो रेनफॉल इज मेन सोर्स ऑफ वाटर. सो व्हेन रेन इज फॉलिंग, जब बारिश आएगा, इस ऑल द वाटर बॉडीज, ये जितना भी वाटर बॉडी से, आप लोग का वाटर बॉडी से दे कैन फेच, वो क्या होता है कि भर जाता है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल द sources of water, big pipes, they can set plumbers, peoples, they can set with the supply of water, they can fill the big tanki, बड़ा टैंकी को फेच किया जाता है, भर के रखा जाता है. एंड विद द हेल्प ऑफ टैप के हेल्प से, नल के हेल्प से, बड़ा रेन कैसे सिंटेक्स के हेल्प से वो पानी हम लोग को क्या मिलता है? सप्लाई में मिलता. Okay students, I hope you all understand. Okay, see. Sea, river, ponds and ocean all are get filled of the rainwaters. And as I told you, sea, river, ponds, groundwater, lake, these all are filled of क्या चीज से भरता है? Rainwater से भरता है. Okay, see. Some rainwater get collected under the ground as seep into the soil. So some rainwater जो बारिश का पानी होता है वो ग्राउंड वाटर में क्या होता है? सिप होता है. SEEP, सिप का मतलब होता है उसमें सोखता है, जो क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर में स्टोर होता है. ओके. एंड व्हेन दैट वाटर इज स्टोर्ड
under the ground with the help of hand pump. With the help of hand pump means chapakal, that water we will use. Okay. Okay. The water which we get from the ground, जो पानी हम लोग अंडरग्राउंड से निकालते हैं इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर. अब आप लोग सोच रहे हैं कि ग्राउंड वाटर कैसे निकालते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप, चापाकल के हेल्प से ग्राउंड वाटर को हम लोग यूज करते हैं. वी ऑब्टेन दिस वाटर थ्रू द वेल, ट्यूब, वेल एंड हैंड पंप आल्सो. सो ग्राउंड वाटर, स्टूडेंट्स लुक एट हियर. सो ग्राउंड वाटर, GROUND, ग्राउंड वाटर हम लोग को कैसे मिलता है. से विद द help of hand pump and well. Well means कुआं. कुआं के हेल्प से, with the help of tap and कुआं के हेल्प से हम लोग को ग्राउंड वाटर मिलता है. हम लोग ग्राउंड वाटर को यूज कर पाते हैं. स्टूडेंट्स सी, और ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है. When rain is falling, जब बारिश होता है, that ground is sift the water, वाटर को सोखता है. And in this way that water will be stored under the ground. Okay, and with the help of this hand pump and well we can use the water. Okay students, so see, now we can discuss about what is the uses of water. As I already told you, there are so many uses of water. For example, drinking, washing, cooking. Okay, so अब हम लोग डिस्कस करेंगे. Okay, uses of water. Uses of water. See, number one is, see, we need water from drinking, bathing, cooking and brushing. So we need water from, first always remember students, we need water for drinking. हम लोग को चाहिए drinking, washing, brushing and cooking. Okay, and animals and birds also they need water. Students, और even birds को भी अपने लाइफ में सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए. We need water. Okay, students, animals, birds, they also need, animals and birds, animals and birds, they also need water. Animals and birds, they also need water. उसको भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए सर्वाइव होने के लिए. ओके, प्लांट नीड, प्लांट ऑल्सो नीड, प्लांट को भी पानी चाहिए. प्लांट ऑल्सो नीड, प्लांट नीड वाटर. क्यों चाहिए प्लांट को? प्लांट को चाहिए टू ग्रो. क्या चीज होने के लिए? ग्रो होने के लिए. ओके, वी नीड वाटर द पुट आउट द फायर ऑल्सो. हम लोग को पानी चाहिए. वी need water to put fire. आग को बुझाने के लिए भी हम लोग को पानी चाहिए. So student, in this way we all the need uses of water. First one is drinking, washing, brushing and cooking. Second one is animals also they can need, animals, birds, so many different creatures are there, they also needs water. Okay, and plant also need water to grow, right? And last one is we also need water to put the fire. So I will revise
one more time. Just एक बार रिवाइज करते हैं. Look at here. Okay. So look at it. So wait. Okay. So what we discuss today? So today we are discuss about water. So water is a liquid form which they did not have any color. Okay. Water is a colorless. Water क्या है? Colorless है. Uses of water क्या है? Brushing, washing, drinking and cooking. Okay. See, water is very essential for our survival and life. So students, always remember, water is very important for our life because we cannot live, we cannot survive without water. Our day will be started from the water only. Okay, we cannot live without water. हम लोग पानी के बिना बच नहीं पाएंगे. So here is a short topic, that is sources of water. So sources of water is sea, river, ponds, groundwater and lake. Right? So these all are the sources of water from where we will get the water. Okay, and rainfall is the main source of water because with the help of rainfall, all the water bodies they can fetch, otherwise fill the water bodies, and in this way we will supply the water with the help of tap, big pipes, tanky and all, and we get the water. Okay. Yes. And next is groundwater. So let's see what is groundwater. Groundwater is a dead water which when the rain is falling, that water will be stored inside the ground. Okay, and with the help of hand pump and well, we can use the groundwater. Okay, and as I already told you, in our life there are so many uses of water. First one is drinking, washing, brushing, cooking, and all animals also they can need water. Okay, same like that, plant also they can need water for growing, okay, to grow. And last one is we need water to put the fire. Okay, so in this way your science class is over. Your next class will be continued by Ankita Miss. Okay, and your HW is आप लोग का होमवर्क है. आप लोग का your HW is write five sources of water. I hope you all understand. Thank you. Have a nice day. Thank you, student. Have a nice day. Good afternoon, everyone. So this is your English class. All of you get ready to study with your book and copy also, okay? So let's give me a quick reply those who are present in the class.
Okay, today I'm going to start the new chapter from chapter 12. Okay. Chapter 12. The name of this chapter is using has and have. Right? So, has and have का जो मैंने पहले भी करा चुकी आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा ना यूजिंग ऑफ हैज एंड हैव का. सो first of all, note means to be remembered.
used to. Has or have are used to show possession. Okay. Possession. ये possession वाला चीज क्या होता है? ये possession क्या होता है? ये possession क्या होता है? इसका मैं एग्जाम्पल्स में बताने वाली हूँ. एग्जाम्पल, ये स्पीकर, ये इंसान है, ठीक है, ये मैन है, इसके पास एक पेंसिल है. ओके, समझो इसके पास एक पेंसिल है. ओके, ये क्या है? इसका थिंग्स है, राइट? थिंग्स है. पेंसिल इसमें आता है, इसका थिंग है. ओके, सो ये इंसान है, मैन है, और ये इसका चीज है, थिंग है. जब कोई इस चीज का, इस थिंग, इस पेंसिल का, इस चीज का मालिक कौन हुआ? ऑनर. ऑनर का मतलब होता है मालिक. ऑनरशिप किसको जाता है? ऑनरशिप का मतलब होता है कि मालिक. इस पेंसिल का मालिक कौन है? बताओ मुझे. इस पेंसिल का मालिक कौन है? इस पेंसिल का मालिक इस इंसान है, मैन है. के ये मैन है, के ये इंसान है. इस पेंसिल का जो मालिक है, इस पेंसिल का जो मालिक है, वो मालिक कौन है? इसका इसका मैन है. के सो एक इंसान और उसके जो सामान के बीच, इंसान और उसके सामान के बीच जो संबंध दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, उसको बोलेंगे वर्ड पोजेशन. इसके जो ऑनरशिप कौन है? इसका जो मालिक है, ये इसका जो इसका मेन मालिक होता कौन है? मालिक इज मैन ना. तो पोजेशन क्या बताते हैं कि ये कोई भी सामान, चाहे वो कोई भी सामान हो, कोई भी चीज हो, इसका जो मालिक होता है, ऑनरशिप, इसको दिखाते हैं. ठीक है. रिलेशनशिप, रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता. किसके रिश्ता? पोसेशन. हमारे हैज एंड हैव किसके लिए यूज होता है? ऑनरशिप दिखाने के लिए. ओके, कोई भी चीज का, कोई भी सामान का ऑनरशिप दिखाने के लिए. और रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड थिंग्स. किसके रिलेशन में? कोई भी नाउन या फिर थिंग्स. ये मैन नाउन ही तो है ना, ये पेंसिल थिंग्स ही तो है ना, है ना? तो ये मैन क्या है? नाउन है. ये इंसान नाउन है, ये पेंसिल थिंग्स है, राइट? सो कोई भी नाउन और थिंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाते हैं, जो ऑनरशिप दिखाते हैं, उसको उस समय एट दैट टाइम उसका मालिक, उसको दिखाने के लिए हम यूजिंग हैज एंड हैव का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? हां, समझ में आया? हैज एंड हैव कब यूज करते हैं? जब भी कोई सामान और नाउन के बीच कोई भी रिलेशनशिप दिखाने हो, तुम्हें उसका पोजीशन, उसका ऑनरशिप दिखाना हो कि ये किसका सामान है, ये मेरा सामान है. ओके, ये मेरा सामान, दिस इज माय बुक. ओके, दिस इज माय बुक. तो ये दिखाने के लिए ना, ये दिखाने के लिए क्या करेंगे हम? यूजिंग हैज एंड हैव का क्या करेंगे? यूज करेंगे. ओके, एग्जांपल, ये पेन है. दिस इज द पेन. ओके, पेन इज अ थिंग्स. ओके, थिंग. एंड आई एम अ girl, right? Woman. So I belongs to a noun, right? And this pen belongs to a thing, right? So इस things का मालिक कौन हुआ? मैं. इसका मैं, इसको खरीदने वाला इसका मालिक कौन है? मैं. ओके, अब ये पेन मेरा है दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैज एंड हैव का. ओके, आई. तो हम कैसे करेंगे? इस पेन को, जिसकी मैं बोलूंगी ये पेन मेरा है. ओके, तो मेरा है. अब मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगी? ये मेरा पेन है. ओके, ओके, आई यानी कि मैं. ओके, आई हैव अ पेन.
interesting राइट। मैंने क्या लिखा अभी मैंने क्या लिखा, जयेश के पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बुक्स है। उनके पास क्या है, बुक्स है। ये बुक्स नहीं है तो जयेश नाम है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध दिखाने के लिए इस बुक का जो मालिक है जयेश है, दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे हैज का। किसका यूज करेंगे, हैज का। समझ में आया? जयेश हैज मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स, जयेश के पास बहुत सारा दिलचस्प बुक्स है। ओके, so बुक्स और जयेश के बीच में संबंध दिखाने के लिए ये बुक्स जो है जयेश का दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैज का। इसकी आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। ये पेन का मालिक कौन है, मैं हूँ। तो इनको मालिक, इसका मालिक मैं हूँ दिखाने के लिए हैव का यूज किया। यानी कि हैव और हैज यूजिंग टू शो पोसेशन, यानी कि कोई भी पोसेशन है कि ऑनरशिप दिखाने के लिए। ओके, कोई भी नाउन और थिंग्स के बीच में संबंध दिखाने के लिए हम इसका यूज करेंगे हैज एंड हैव का। ओके, तो हैज एंड हैव, हैज एंड हैव। एक चीज और बात है, हैज एंड हैव जो है ये कौन सा समय में लगता है, जिस समय में होता है अभी का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, राइट, फ्यूचर टेंस। ओके, ये होता है। तो ऑलवेज ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ओके, प्रेजेंट का मतलब अभी, अभी के लिए मेरे पास जो है। ओके, मेरे पास अभी है, यानी कि पहले नहीं था, अभी है। ओके, अभी है, प्रेजेंट में, स्टिल में जब दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, इसका हैज एंड हैव का यूज करेंगे। और पास्ट को दिखाने के लिए भी है। ओके, पास्ट को दिखाने के लिए हैड है। ओके, हैड को सिंगुलर में भी यूज किया जाता है और प्लूरल में भी यूज किया जाता है। अब इसकी जरूरत नहीं है आपको, अभी बस ये पढ़ना है कि यूजिंग ऑफ हैज एंड हैव। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अब कौन कौन सा प्रोनाउन में, नाउन में हम हैज का यूज करेंगे। एकदम छोटी सी ही, एकदम दिमाग में डालो कि हैज सिंगुलर में यूज करता है जब भी कोई अकेला हो, बस अकेला हो, एट दैट टाइम हम हैज का यूज करेंगे। जब एक से बहुत ज्यादा है, एट दैट टाइम वी यूज हैव। ओके, जैसे कि प्रोनाउन, जैसे कि ही, अब ही तो सिंगुलर है, राइट, कोई भी एक लड़का के रिप्लेस में आएगा ही, जैसे कि जयेश है, जयेश के रिप्लेस में आया ही। ओके, शी एक लड़की है, जैसे कि एंजल है। ओके, तो एंजल के रिप्लेस में आया शी। जैसे कि कोई भी थिंग्स हो, अभी मैंने बताया बुक, बट ओनली क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ओके, बुक, एक बुक में आया, उसके रिप्लेस में एक। ओके, सिंगुलर नाउन, जैसे सिंगुलर नाउन अकेला नाउन, यानी कि बुक है, जैसे कि पेन है। ओके, कोई जयेश है, राइट, कोई स्कूल है, बस वो क्या होना चाहिए, ओनली वन होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, ओनली वन होना चाहिए। ओके, जब कोई अकेला हो, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, क्या किसका यूज करेंगे, हम हैज का यूज करेंगे। ओके, एंड सेम एज इसका ऑपोजिट समझो, उसका ठीक विपरीत। ओके, हैव का यूज करेंगे जब एक से ज्यादा हो, जैसे कि यू, तुम। ओके, जब मैंने, जैसे कि तुम, अब जैसे तुम तो अकेला भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि तुम, मैंने तुम बताया, जैसे इस क्लास में मैंने तुम बताया, इस क्लास का स्टूडेंट्स को, जैसे कि जितने भी आज प्रेजेंट है क्लास में, मैंने तुम बताया। अब जब मैं तुम बताऊंगी, ये तो नहीं बताया ना, वो अकेला रह जाता है, तो और सब क्या करेंगे, हम प्लूरल में लेंगे। ठीक है, तो एक से ज्यादा करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो हम यू में क्या यूज करेंगे, हैव का। एंड आई, मैंने ये लास्ट टाइम बताया था, आई एक एक्सेप्शन है, राइट, आई ऐसा एक्सेप्शन है जो क्या होता है, हमारे एक्सेप्शन है जो हमारे आई अकेला होते होते भी हम किसका, प्लूरल का, प्लूरल हमारे जो है हैव का, पोजीशंस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये एक्सेप्शन है। ओके, सो ये अकेला आ गया। ओके, देन वी एक से ज्यादा होता है, ऑलवेज हैव का यूज करेंगे। दे भी एक से ज्यादा है तो हैव का यूज करेंगे। प्लूरल नाउन भी एक से ज्यादा है, जैसे कि स्कूल से। ओके, जयेश, एंड, यहाँ पे लिखा मैंने एंजल है, पेन से, बुक से, तो हम क्या किसका यूज करेंगे, कौन सा पोजीशन का, हैव का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? सो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, उसका आप होमवर्क कर
exercise we will continue tomorrow. Okay? So till then क्या करेंगे आप लोग कंप्लीट करके ओके सो in the class thank you all and meet we again tomorrow. Okay, thank you, bye bye.